Hello students, welcome back to this channel. Today this lecture is for the human reproduction. Humans are sexually reproducing and are viviparous. So as you know, sexual reproduction we have done already in the first and second chapter. So sexual reproduction means the two parents is required and the gamete formation is there. Viviparous also, you know the term, it is giving birth to young ones. So starting with that, in the human beings, the main reproductive events involved in the sexual reproduction are, number one is gametogenesis. Gametogenesis means the formation of gamete. Gameto means gamete, genesis means formation. Formation of a gamete is called gametogenesis, which starts in puberty period. When the gamete formation starts, then during the adult age or sex act, insemination is there. Insemination means the transfer of the sperms into the female genital tract. Repeating, the first event was gametogenesis, gametes का बनना, and then gametes का transfer होना. When the gamete is transferred to the female reproductive tract, then it is the fusion of the gamete is there called fertilization. The third event in the sexual reproduction in human beings is fertilization. Fertilization means is the fusion of the gametes. After the fertilization, fusion of a gamete against sperm means a zygote is formed, and that zygote undergo the cleavage process, and by the cleavage it forms the embryo named as the blastocyst. That blastocyst in the 7th day of fertilization get implanted in the uterine wall. It is called implantation. Repeating, fertilization के बाद next event है implantation. मतलब that is the fixation or attachment of embryo named as blastocyst into the uterine wall. Uterus की wall में embryo का fixation is called implantation. Understood? If the implantation is there, the embryonic development will continue to take place. So that period, that is the duration of pregnancy in which the embryonic development takes place. Repeating, the duration of pregnancy, which is of 9 months in human beings, is called gestation. And the last event of the sexual reproduction is parturition. Parturition means that is the delivery of the fetus. Delivery of the fetus or a baby means what we are talking about, childbirth is called parturition, means end of pregnancy. It is called parturition. Okay. So, although all the 6 these events we are going to take up in details in the next part of the chapter, but the very important question lies in this. Although start है, basic है chapter का, introduction है chapter का, but 2 to 3 questions are here in this terms, in these terms. The question can be asked about how many events, major reproductive events are there in the human reproduction. It can be the question. Or rearrangement the events in a sequence. Events is given haphazardly
and then it can be asked in the MCQ questions also. Objective questions में भी पूछा जा सकता है कि इसको rearrange करो और give it in a sequence. और 6 events कौन कौन से हैं? Is it okay? It is important to go through in a sequence these events. Clear? The 6 events are repeating again. First is गैमीट्स का बनना, गैमीटोजेनेसिस. गैमीट्स बन जाएंगे, उसका ट्रांसफ़र होना कॉल्ड इंसेमिनेशन. ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एग एंड स्पर्म फ्यूज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा. और वो एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटरस की वॉल में फिक्स हो जाता है. फिक्स के लिए वर्ड क्या आ रहा है? इम्प्लांटेशन. ठीक है. देन 9 months ऑफ प्रेगनेंसी विल स्टार्ट, दैट इज जेस्टेशन पीरियड. ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं. और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन. ओके. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 टेस्टिस. Next, accessory ducts, that is Rete testes, Vasa efferentia, Epididymis and vas deferens. Number 3 is the glands. The 3 glands associated with the male reproductive system are seminal vesicle, prostate and bulbourethral or the Cowper's gland. The next 4th component of the system is external genitalia, that means is the penis. So these structures we are going to take up in the details in the next part of the lecture. And along with this, this is a diagram of your NCERT book. This is a sectional view of the male reproductive system in a front view. It is a front view and it is the diagrammatic sectional view in which even the part of a testis is shown in the details. मतलब testis का LS or longitudinal section is also described in this diagram. And all these components we are going to take up one by one in details in the next part. Okay, just repeating. ये diagram हम डिटेल में आगे भी पिकअप करेंगे, बट स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि क्या है इसके 4 कंपोनेंट्स. द मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें स्पर्म बनते हैं इज कॉल्ड टेस्टिस. पेयर है तो पेयर के लिए प्लूरल वर्ड यूज़ किया विद द स्पेलिंग इज ई के साथ. जब सिंगुलर लेते हैं तो आई के साथ स्पेल होता है, दैट इज़ द टेस्टिस. And then you can have a look to the diagram also over here. Accessory ducts means additional ducts जो sperm की transport में help कर रही हैं. A bit complicated diagram है. I am going to explain this diagram in the next part. ठीक है. Rete testes, Vasa efferentia, Epididymis, vas deferens. ठीक है. These 4 are accessory ducts हैं. और 3 ग्लैंड्स हैं. कौन कौन सी? नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, नेक्स्ट प्रोस्टेट एंड नेक्स्ट इज bulbourethral gland. Means they will provide the secretions or lubrication or nourishment to the sperms. Ducts transport करेंगी, glands उनको nourish करेंगी. And then external genitalia is penis. Is it okay? That is where the topic we are going to take up is the main components of the male reproductive system. Starting with the first is testes, which is a primary sex organ and in which the sperms are formed. Testes are not present in the abdominal region. Instead, testes present outside the abdominal cavity in a pigmented pouch of a skin called scrotum. Testes कहाँ present है? Not in abdomen. Instead,
a pigmented pouch of a skin called scrotum. This scrotum acts as a thermoregulator, means regulates the temperature for testes, or it maintains the low temperature of the testes, which is required for the sperm formation. What is the one word for the sperm formation? It can be the spermatogenesis. Repeating, टेस्टीज एब्डोमेन में नहीं है, एब्डोमेन के नीचे एब्डोमिनल कैविटी वी कैन से between the that is a two legs is present a scrotum, which is a pigmented pouch of a skin, and in that pouch scrotum the testes are lodged or present. Next point comes, what is the role of a scrotum? Or your next question can be, that is why it acts as a thermoregulator. Next question can be, why it needs a less or a low body temperature, that is a less temperature than the body temperature. ठीक है, तो टेस्टिस को स्पर्म्स बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए. सो वो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज स्क्रॉटम. तो व्हाट इज वी आर यूजिंग द वर्ड फॉर इट इज बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना. नहीं, यहाँ पर हम टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि स्क्रॉटम है थर्मो रेगुलेटर, और ये टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस रखता है, and which is required for spermatogenesis, means sperm formation. Is it okay about the scrotum part? That is in the previous diagram mein this is shown over ki testes they are present in a scrotum. Next, testes are oval in shape. तो ओवल शेप का मतलब क्या हुआ? लेंथ इज मोर एंड विड्थ इज लेस. सो इट्स विड्थ इज 2 to 3 centimeter and length is 4 to 5 centimeter. So easy to learn its dimensions. It's NCERT figure number. Don't skip any word, any term, any figure number from your NCERT book. तो स्टार्ट हम कर रहे हैं किससे? 2, 3, 4, 5 न्यूमरल, यू नो दैट 2, 3, 4, 5. तो विड्थ चौड़ा ज़्यादा है, मीन्स दैट इज विड्थ इज लेस 2 to 3 centimeter and length is more, that is 4 to 5 centimeter. Testes which are oval in shape, covered on the one side is by the dense coverings. Their dense coverage 3 in number. These 3 names is not mentioned in your NCERT. It is present opposite to Epididymis. ठीक है, later on we can take up that part. But अभी आप थोड़ा बेसिक को ही कवर करें. It is टेस्टिस का. अब ये पार्ट, ये डायग्राम LS ऑफ अ टेस्टिस है, जैसा आपने 11th में पढ़ा था LS ऑफ अ किडनी, मतलब longitudinal section of a testis showing seminiferous tubules in it. So इसको डिस्क्राइब करते हैं कहाँ पर है, क्या है seminiferous tubules. टेस्टिस का जब LS सेक्शन कट किया तो अंदर से टेस्टिस में सेप्टाज है. सेप्टा मतलब पार्टीशंस हो रही हैं. जब पार्टीशंस हो रही हैं, सेप्टाज हैं, तो दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपार्टमेंट्स इन द टेस्टिस. And in each testis there is present 250 compartments called testicular lobules. Repeating the term is testicular lobules. क्या है? टेस्टिस में compartments. Compartments कैसे बने? By the partitions called septa. And in each testicular lobule
there is present 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Repeating, testicular lobules के अंदर जो compartments हैं, in the diagram you can have a look, जिसको मैंने अल्ट्रा पिकअप की है, ये LS of testes है. 1 to 3 I have filled, 3 compartments को मैंने fill किया है, and the next onwards I have left as such. तो compartment समझ आ गया आपको, I think so, testicular lobules, and in that is present a seminiferous tubules which are highly coiled structures. Okay, and the seminiferous tubules are the, we can say, the structural and the functional unit of the testes, because in it the sperms are formed. That is we are going to take up in the next diagram now. Is it okay in this diagram? So इस diagram में repeating again, testes oval in shape है. Second is septa partitions. Okay, partitions के कारण compartments बन गए called testicular lobules. And testicular lobules के अंदर all it is to be filled, ये आपको थोड़ा clarity के लिए मैंने बाकी empty छोड़ दी है, तो उसको कैसे draw करना है, you will be easy to pick up then for you. Testicular lobules के अंदर present है seminiferous tubules. Is it okay? Next, coming to the next, the seminiferous tubules structure, और इसका थोड़ा आगे डिटेल टेकअप करते हैं, और ये डिटेल विल बी टेकन अप विद दिस डायग्राम. ये डायग्राम अगेन डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है of the seminiferous tubules. मतलब इस डायग्राम में we can say this is the TS of a testis, showing seminiferous tubules in ultra sketch. ठीक है, ये डायग्राम आपका NCERT का है. ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे when we will do it is spermatogenesis. Seminiferous tubules are lined by a special kind of epithelium called germinal epithelium. Why called germinal epithelium? Because this epithelium is going to form, that is the sperm. So these germinal epithelial cells are of two types. One is cube-shaped cells named as male germ cells, and second is pyramid-shaped cells called Sertoli cells or nurse cells. Okay, repeating, seminiferous tubules का ये TS सेक्शनल व्यू है. इसमें दो टाइप के सेल्स हैं. एक है मेल जर्म सेल्स जो क्या बनाएंगे, स्पर्म, और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स जो स्पर्म्स को नरिश करेंगे. मेल जर्म सेल्स by the process called spermatogenesis will produce first of all spermatogonia and then undergo the further stages, further divisions, and finally produces the male gamete named as the sperm. This process of formation of sperm from the spermatogonia is called spermatogenesis. Yes, बेटा spermatogenesis के लिए हमारा अलग से एक लेक्चर रहेगा. इस पार्ट में, इस डायग्राम के लिए या इस टॉपिक में सिर्फ इतना पिकअप कर रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है. अदरवाइज स्पर्मेटोजेनेसिस अपने आप में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आगे आएगा, अलग लेक्चर है इसका, अलग वीडियो होगा. ओके, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी आपका एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है. ये भी 3 to 5 मार्क का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें से अभी मैं आपको लेटर ऑन लास्ट में बताती हूँ इस टॉपिक में क्या होगा.
अब ये 3 to 5 मार्क सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका ये टीएस और डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ओके, तो दिस डायग्राम इज जस्ट शोइंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल्स हैं। एक है मेल जर्म सेल्स जो स्पर्म को बनाएंगे, दूसरे हैं पिरामिड शेप सेल्स कॉल्ड सर्टोली और दैट इज अ नर्स सेल्स जो स्पर्म्स को नरिश करेंगे। ओके, दीज टू टाइप ऑफ सेल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और जब 3, 4, 5, 6 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं इनके बीच में जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस को बोलते हैं पहले तो इंटरस्टिशियल स्पेस। व्हाट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। In these interstitial spaces, there is present a leading or interstitial cells. ये अब आपका 2 to 1 मार्क 3 मार्क अच्छा क्वेश्चन है कि what are leading cells और what are interstitial cells, where it is present, what is its role. रूल में अपने आप में एक और क्वेश्चन अभी आ जाएगा। Name the cells which secrete the male sex hormone which is a testosterone. So I am again repeating. Regions outside the seminiferous tubules is called interstitial spaces. In spaces में cells हैं called leading और interstitial cells. और ये cells जो हैं they produce that is the testicular hormone. Testicular hormone is called that is androgen, or that is the male sex hormone called a testosterone. In addition, there are also present any other immunologically competent cells are also present, but that's not very important role in any way for that sperm production, but just for an immunity purpose it is. So for this I am giving you now putting up this point in the form of a question. इसमें आपका 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है व्हाट आर सर्टोली सेल्स, वेयर इट इज प्रेजेंट। ओके, कहाँ है सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है। ओके, ये स्पर्म्स को नरिश करते हैं। दूसरा 1 to 2 मार्क क्वेश्चन पर आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर लीडिंग सेल्स वेयर प्रेजेंट। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट है और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ओके, next is accessory ducts which are associated with the testes, and these ducts help in storage and transport of sperms from the testes to the outside through the urethra, which opens at the tip of the penis. These accessory ducts are Rete testes, Vasa efferentia, Epididymis and Vas deferens. Just repeating, this is your back question also, NCERT back question भी है ये आपका। Name the male sex accessory ducts. The first point 4 in number they are. कितनी ducts हैं टोटल जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही हैं स्पर्म्स की? दैट इज 4 इन नंबर है, पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, एंड दैट 4 इन द डायग्राम कैन हैव अ लुक नाउ। फर्स्ट इज रेटी टेस्टिस, नेक्स्ट वासा एफ्रेंशिया,
Next, epididymis, followed by vas deferens. So, seminiferous tubules, which are found in the testicular lobules of the testes, they are blind at one end. So, you can have a look to the diagram, please, again. I have drawn in the three boxes, three compartments, only the seminiferous tubule, rest is empty for your practice only. So, they are blind at one end, and at the other end where they open, there it form a mesh, a network. वहाँ पर एक जाल सा बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है, and that mesh, a network, is called Rete testes. Is it okay? Repeating. Seminiferous tubules कहाँ open कर रही हैं? In the Rete testes. These Rete testes, that is a form of a network, then leads into the fine ciliated ductules. मतलब from here arises the fine or patli or fine cilia containing ducts called Vasa efferentia. Rete testes leads into Vasa efferentia. Vasa efferentia then leads to the epididymis, which is present on the along with the posterior surface, means on the inner side of the testes, क्योंकि बाहर की तरफ testes की coverings है और अंदर की तरफ present है epididymis. And in the epididymis, again the temporary storage, maturation, and even the nourishment of the sperms is going on. From the epididymis then extends the duct that is called vas deferens. Is it okay? This vas deferens from the scrotum region is extending upward through the abdominal cavity. It then takes a turn over the urinary bladder. So this is the point I will repeat again in the diagram, the next diagram. I think in this diagram, in this part, we have to focus just first is male sex accessory ducts. क्या नंबर था इसका? 4 है टोटल. पहला पॉइंट कि यहाँ कोई स्किप ना हो जाए आपके टर्म, कोई डक्ट. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अंदर की तरफ एक नेटवर्क है, क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस, राइट. रेटी टेस्टिस से फाइन डक्ट्यूल्स निकल रही हैं, पतली पतली छोटी छोटी डक्ट्स कॉल्ड वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया ओपन कर रही है एपिडिडिमिस में, और एपिडिडिमिस लीड कर रहे हैं और यहाँ से डक्ट निकल रही है कॉल्ड वास डिफरेंस, और फिर इसने डक्ट ने एब्डोमेन रीजन में पहुँचना है. सो these four are the male sex accessory ducts. तो इसका फंक्शन क्या है? That is storage and transport of sperms. Is it okay? First must cover up to this your diagrams, then come to the only the next diagram. This is your next is your NCERT, again the diagram. That is a diagrammatic sectional view. It is a lateral view of the male reproductive system. So इस diagram को clear करेंगे parts में हम, ठीक है. So again coming to that diagram, थोड़ा simplified है to make you more clear about the topic. So testes, which are present in the scrotum, and the inner side of the testes is having epididymis. From the epididymis extends the duct called vas deferens. Is it okay? So अब ये डायग्राम
लेटरल व्यू है, बट इसमें टेस्टी सेक्शनल व्यू में नहीं शो किया हुआ. ओके, दैट सेक्शनल व्यू आपने एनसीईआरटी के डायग्राम में यू हैव ऑलरेडी सीन. इट्स क्वाइट हॉच पॉच इज गिवन. तो वो ड्राइंग आप ज़रूर ड्रॉ एक बार ही कर लें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम और अ क्वेश्चन. सो अब इस डायग्राम को आगे फॉलो कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, दैट इज़ इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन मेल असेसरी ग्लैंड्स. ओके, इस डायग्राम में विल बी मोर क्लियर टू यू. सो vas deferens taking a turn, and when it is taking a turn ऊपर आ रहा है abdominal region में, it takes a turn over the urinary bladder. urinary bladder से turn ले रहा है जब ये, तो it is going to receive the duct from the gland called seminal vesicle. Is it okay? Seminal vesicle, and then its name is now is ejaculatory duct. जब इसने इसको रिसीव कर लिया है तो अब इसका नाम क्या है? That is ejaculatory duct. This ejaculatory duct then joins with the urethra. So I'm going to hold on here now. Just remain focused on this diagram now. I think lower part, is it okay? Testes, epididymis, vas deferens and the scrotum. अब वास ड्राइंग आपकी इसी वे में जाएगी, वो भी आई विल शो यू इन द पार्ट्स आल्सो. आपकी ड्राइंग का स्टार्ट जो है वो टेस्टी से होना चाहिए. फिर वास डेफरेंस टेकिंग अ टर्न ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा. सो मीन्स दिस इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मीन्स वो डक्ट जो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है वो थी वास डेफरेंस. जब वो सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन कर गई, अब इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, एंड दैट ज्वाइंस विद द यूरेथ्रा नाउ. तो मीन्स नाउ इट इज, वी कैन से अबाउट दिस इज अ यूराइनोजेनिटल सिस्टम, बिकॉज दैट यूरेथ्रा ओपन्स एट द टिप ऑफ द पेनिस. मीन्स urethra here carries the sperms as well as the urine also. That is the only one aperture is there for urine as well as for the sperm. So again in this diagram you can have a look on the side of that seminal vesicle is shown. At the back is the digestive system, a part is shown rectum and the anus. दैट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम का सेपरेट अपर्चर है. एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव दोनों एक ही अपर्चर से ओपन कर रहे हैं, एंड दैट अपर्चर इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीएटस. इज इट ओके? नाउ कमिंग बैक टू दैट मेल accessory glands, seminal vesicle opens here. Then at the point of a union of ejaculatory duct with that of urethra, there is present one more gland called prostate. It is one only because वो उसको surround कर रही है. Is it okay? It is surrounding it is. क्योंकि seminal vesicle paired है. Next. Then afterwards, it also receives the one more small accessory gland is bulbourethral gland or the Cooper's gland. That is, numbering is given here is 1, 2, 3. They are male accessory glands. Clear? So that opens here. All these ducts, all these glands, ducts, they open into urethra. And urethra opens at the tip of the penis by the aperture called urethral meatus. Clear this diagram, I think, all the components. Now we are left with the two terms here. Over the urethra, there is present a special tissue. This is fourth component पर है हम digest इसके reproductive system में.
that is external genitalia or a penis. Penis is also called as a external, that is a male genitalia. Over the urethra there is present a special tissue that is shown with a red color pen now, और ये जो red part है वो ऊपर आकर expand हो गया है. ओके, ब्लू के ऊपर जो रेड लाइन जा रही है वो टिप पर एक्सपैंड हो गया है. सो अ स्पेशल टिश्यू ओवर द यूरेथ्रा at the tip get expanded and is called glans penis. Repeating, that special tissue is the corpus spongiosum. This term is not given in the NCERT. Again, hold on for this. Urethra के ऊपर एक special tissue है जो erection of that is penis में help करता है at the time of that is a sex act to facilitate the insemination, sperm की transfer के लिए. और वो special tissue tip पर expand हो गया है जिसको बोलते हैं glans penis. And that glans penis is covered over by the refractile or a loose fold of a skin called a foreskin. Can have a look to the diagram, and then over this red line there is present afterwards completing this system, then draw the outline, means it is a fold of a skin. That fold of a skin is called a foreskin. It is. Okay, so that is for the male reproductive system. Sectional view है. So इसी को अगर parts में pick up करें तो start आपका होगा testes, epididymis, vas deferens and the 3 glands opening at the tip of the penis, urethral meatus. So इस diagram में अभी बाहर का skin cover नहीं बनाया है, स्क्रॉटम नहीं बनाया, वो स्किन के साथ ही कॉन्टिन्यूशन में है, एंड इवन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट शोन एंड इट इज देन इजी फॉर यू टू ड्रॉ नाउ. ओके, दिस इज द वन व्यू वी कैन से. वो आपने कंप्लीट डायग्राम देखा था, हमने उसको स्टडी की है. इसमें उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके अब पार्ट्स में आप ड्राइंग अलग अलग कीजिएगा. ठीक है, सो व्हेन दिस इज ड्रॉन, इसके बाद आपको this outline to be drawn and it is your wish to draw कि digestive आप बता रहे हो या नहीं बता रहे हो इसमें. This is just location situation is showing here in this next diagram. Okay, black color की outline से इसका cover बन गया, and then this is a full-fledged diagram is clear to you. Okay, so I think कमिंग टू द, थोड़ा एक बार रिपीट कर लें इस पार्ट को, मेल असेसरी ग्लैंड्स को. ये भी आपका बैक क्वेश्चन है. नंबर 1, द मेल असेसरी ग्लैंड इज seminal vesicle. The secretion of the seminal vesicle is alkaline in nature and it forms approximately the 60% of the semen, and it contains the fructose. If you remember, fructose is a fruit sugar and which is a source of energy over here for the sperms. Clear? In addition to this, it also contains the prostaglandins. Second is the prostrate gland, which is single and it is a compact around the urethra. Its secretion is slightly acidic and it nourishes and activates the sperm. It constitutes approximately the 25% of the semen. Third is the corpus or a bulbourethral gland. It is a pair of small ovoid gland, oval in shape, small in structure. Alkaline secretion है, which mainly secretes the mucus, and that mucus mainly lubricates the penis or the lining of the urethra. The secretion of these 3 glands is called seminal plasma. Very important term is
सेमिनल प्लाज्मा क्या है? सेमिनल प्लाज्मा है that is the secretion of these three glands only, which is having fructose, calcium and certain enzyme. Means it is the part of a semen but not includes its sperms. सेमिनल प्लाज्मा सिर्फ इन 3 ग्लैंड्स की सिक्रीशन को बोलते हैं, which is having, which contains, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. Okay.